सो हेलो सर, थैंक यू इस मीटअप में आने के लिए। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना अपना इंट्रोडक्शन दें कि क्या चीज़ है, कैसे क्या स्टार्ट होता है। So basically, we are a hosting company. We are majorly into managed services, security services, hosting, WordPress hosting. And WordPress is something that connects me from almost more than a decade. So this event attracted because there are a lot of people coming from the same community. They were aware actually of what they do, what they want to do. So blogging is something very near to me. So event actually had been very good. I have attended previous events also, but this was actually very good. People were able to communicate, they were able to share your thoughts, new insights, everything was there. मैं जैसे इवेंट में हमने सुना कि लोग ये सोच रहे हैं कि व्लॉगिंग जो पार्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्लॉगिंग का जो हम फ्यूचर देख रहे हैं वो ख़त्म है, या अभी इसमें टाइम है इस चीज़ को लेके कि व्लॉगिंग अभी कहीं नहीं गई है? सी ब्लॉगिंग अभी कहीं नहीं गई बिकॉज आज की डेट में भी अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वी गूगल अराउंड, राइट, वी सर्च, and there are a lot of blogs that we see and most of the problems we are able to sort from that. So the future is there. Maybe the way of delivery would evolve, but blogging is very much there and will stay because that is where you're sharing your own opinion. You are not taking opinion from somebody and giving it forward. तो जैसा कि हम अभी तक जितने मीटअप्स करते थे वो सेशन वाइज मीटअप होते थे कि एक स्पीकर आया, उसने जो आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन थी उसने डिस्कस करी। ये फर्स्ट हमारा ऐसा था कि हमने ओपन डिस्कशन करा है कि जिसमें सबको बोलने का मौका मिलेगा, किसके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा बेनिफिट है या जो हम सेशन जो स्पीकर वाइज़ करते थे वो ज़्यादा बेनिफिट है? Both have got their own audiences, right? So there are two kind of people who actually go in the market. One wants to consume the information that is available. Another type of user is who actually wants to discuss the information that they already have. Right. So both the concepts are very good. This concept is more for the people who are aware what they are doing. वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में. तो लास्ट क्वेश्चन को एंड करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये डिस्कशन हुआ, तो आप इसे कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? लाइक देनी कितने में से? 10? I would definitely give it 9.5. ए, थैंक यू। Why not 10? Because there are people who actually register but they don't come. I think they're missing on something, right? They should actually come and share their views also. It is important. Thank you. Thank you.